I dedicate this video to my dad because I grew up hearing this from him. He used to write this on the first page of his diary. Krishna says, whatever happened was good, what's happening is going well, and whatever will happen will also be for the good. Do not regret anything in the past. Do not worry about the future. Just live in the present. Hare Krishna. The Bhagavad Gita, often referred to as simply the Gita, is a 700-verse Hindu scripture in Sanskrit that is part of the Hindu epic Mahabharata. The Bhagavad Gita is Krishna's battlefield discussion with Arjuna, and in this video we're going to discuss the essence of the Bhagavad Gita with none other than the enigmatic Hitambarishji. Guruji, we all know that in this present age, people are so absorbed in the mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic scriptures. We are aware that the Bhagavad Gita is an ensuing monologue where Krishna enunciated the philosophy of life to Arjuna when he was faced with the dilemma of going to battle against his teachers, relatives and acquaintances. In an age where we are witnessing violence in the name of religion, the Bhagavad Gita elucidates the true meaning of religion and faith. While the religious institutions, they create a fear of God, the Gita, it tells us to dispel all fears and to pursue karma with utmost sincerity. Guruji, could you say a few words on Karma Yoga as given in the Gita and its relevance in our day-to-day life? As you asked the question Karma Yoga, there are two words. One is karma and other is yoga. Gita is telling the karma which is able to connect you with that integrity, the ultimate truth. ऐसा मुझे लगता है कि एक रास्ता ऐसा है जिस पर चलकर भक्ति कर्म हो जाती है और एक रास्ता ऐसा है जिस पर चलकर आपका कर्म भक्ति हो जाता है. गीता एक ऐसी विधि देती है, गीता एक ऐसा उपाय, एक ऐसा मार्ग देती है जिससे कर्म को भक्ति बनाया जा सके. You know, life is like that. We are moving on an expressway. चलना हमारी विवशता है, कर्म करना ये आपकी मेरी एक विवशता है. आप और मैं कर्म किए बिना नहीं रह सकते. We can't live without karma. So I think जीवन है, किसी योग्य हाथ में पड़े. एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा. एक व्यक्ति जो जंगल से लकड़ी चुनकर लाता है और घर लाकर उसे चूल्हे में जला देता है. वो लकड़ी जलने के बाद स्वाह हो जाती है, राख हो जाती है, मैला धोने के काम आती है. वही लकड़ी एक साधु के हाथ में पड़ती है, वही लकड़ी एक तपस्वी के हाथ में पड़ती है. वो उसे घर लाता है, उसे अभिमंत्रित करके पवित्र करता है, उसे यज्ञ की वेदी में जलाता है. दोनों ही लकड़ियाँ जलती हैं, लेकिन एक जलने के बाद स्वाह होती है और एक जलने के बाद भभूति हो जाती है. एक से मैला धोया जाता है और एक को बड़े आदर और सम्मान के साथ शिरोधार्य किया जाता है. तो कर्म भी कुछ ऐसी ही विधि है, कर्म भी कुछ ऐसा अधिकार है जो उस महामहिम ने आपको दिया है. और गीता इज टेलिंग, लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग दैट कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. तो कर्म ऐसा हो कि जिसमें जब आप कर्म के फल का विचार करते हैं तो you know this is something not authenticated. You are not authorized for that. You are an energy, I am an energy, and we are one energy, the very energy of life. So the part of energy we spoil or we invest in thinking that what is going to be the output of the karma is totally getting waste. When we are anticipating the fruit of karma, that part of energy is getting waste. So the part of energy, if we put in the effort we are doing, and we should keep quiet, wait and watch. For example, हमारे बड़े लोग कहा करते थे, जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान.
एक ईमानदार आदमी शाम होने से पहले अपने घर काम करने वाले मजदूर को उसका मेहनताना देता है, then why he will not give? So कर्म योगा is do the karma with 101, क्योंकि गीता नाकाम होना नहीं, गीता निष्काम होना सिखाती है। गीता का कर्म योग अर्थात आप नाकाम नहीं, आप निष्काम हो जाएं। सेल्फलेसनेस शुड बी द इंग्रेडिएंट ऑफ योर लाइफ। Very true. Guruji, Krishna says that people who eat too much or eat too little, who sleep too much or who sleep too little, they will never succeed in meditation. But those who are temperate in eating, in sleeping, in work and recreation, who manifest a balance in their lives, will definitely come to end of sorrow in their life through meditation. Still, we know that our mind is restless and it is so hard to restrain. Can you guide us how to make our mind more peaceful and how to still our thoughts? First of all, I would like to tell you that peace never happens in the mind. And absolutely there is no need to still the thought process. As I told you, कि you are an energy and energy can neither be created nor destroyed. So, you know, what is our life? Who are you? Who are me? I am, what is my thought process? आप क्या हैं? सीधे शब्दों में आप अपने विचार की फसल हैं, मैं अपने विचार की फसल हूँ। आप और मैं क्या है? आपका मेरा व्यक्तित्व क्या है? आपका मेरा विचार ही आपका मेरा व्यक्तित्व है। So absolutely there is no need to still the thought process, and all the effort will be in vain if we try to do so. Just try to connect the thought process with the positivity. And as you ask कि गीता में भगवान ने कहा कि जो लोग बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, या बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, तो गीता में भगवान ने एक स्थान पर कहा युक्ताहार विहार। एक बड़ा सुंदर संदेश छिपा है इसमें कि इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। There is nothing useless in this world. And I think that beauty lies in balance. आप सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक एक छोटा सा कार्य जो आप रोज करते हैं in your day-to-day life, but that needs a balance. For example, the tea, your bed tea. Yeah. But there is a perfect balance. A proportion is there. आपको कौन सी चीज कितनी चाहिए? This is the art of living, I think. And Gita is telling the art of living indeed. कि इस यहाँ पर आपके चारों ओर कुछ भी निरर्थक नहीं है। आपको कब लेना है, आपको कितना लेना है, और आपको क्यों लेना है, आपको कैसे लेना है। एक फूल की खुशबू फूल तोड़कर ली जाती है, जिसके बाद उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, और एक भंवरा है, वो उस फूल पर बैठकर उसका मकरंद लेता है और उड़ जाता है, और फूल वैसे ही मुस्कुराता रहता है। सो आप और मैं भी इस संसार से लें, इतना लें कि ये संसार मुस्कुराता रहे। जिस पेड़ का फल आपने और मैंने खाया है, उस पेड़ के फल को खाते हुए हम ये विचार करें कि एक बीज हमें भी कहीं डालना है, जिसका फल कोई और आकर खाए। So I think that there is absolutely no need to still the thought process, and by making the thought process still, there is no peace, because peace is not happening in the mind. Peace is somewhere else at the very highest of energy level, at the level of soul. And by handling the thought process with the care, because it is so fragile, we should handle with care. By handling it with care, we can elevate ourselves to that zone. What you are asking is peace. Guruji, this is my last question to you, and I know that all your devotees out there who are watching you must be eager to listen to this one. What is the essence of the Bhagavad Gita? Arjuna was in a dilemma, as you told me. The queries were on and on. He was asking, Krishna was answering. But at what point he got the ultimate rest of mind or the peace of soul? It was when Krishna told that Sarvan dharman parityajya mamekam sharanam praja. Dispel all the fears, and Arjuna, come to me. I will make you free from all the trauma. The essence of Gita is the unconditional surrender in the lotus feet of Krishna.
Indeed, I must say that the Bhagavad Gita is truly the jewel of India's spiritual wisdom. Thank you, Guruji, for your enlightened thoughts. It was so nice listening to you. थैंक यू, सेम है, प्रणाम।